So CUT 2025, we are discussing the syllabus, general aptitude test, and today we'll discuss the reasoning part of general aptitude test. Now general aptitude test obviously contains all these components: GK, current affairs, general mental ability, numerical ability, quantitative part, and reasoning, logical and analytical reasoning part, which is very, very important. So what comes under reasoning component based on the reviews of previous year general test, which is now renamed as general aptitude test. Okay, so general test, the structure is 50 questions to be attempted in 60 minutes, 5 marks for correct, right, and negative marking of 1. So 5 mark for correct, which means total 50 into 5 to 50 marks paper, negative marking of 1 mark, and no marks will be awarded or deducted for leaving a question unattempted. ये है reasoning syllabus based on past year CUT papers. So all these topics have come. If you will see the reasoning topics, series, number series, alphabetical series, alphanumeric series, missing number based questions, blood relations, family tree, directions based questions, linear arrangements, circular arrangements, rankings and orders, coding, decoding, symbol based logic, quantitative comparison, syllogism, dictionary order, logical sequence of words, Venn diagram, logical puzzles, logical series, analogy, odd one out, selection criteria, matrix arrangement, groups and conditionalities, non-verbal reasoning, visual reasoning, figure completion, figure formation, dice and cube based questions, paper folding and cutting based questions, mirror and water image based questions, clocks and calendars, data sufficiency based questions. Then you have statements and conclusions, assertion and reasoning based questions, sequencing based questions, analytical reasoning, figure counting, number of triangles, squares in a given figure, vastness. But easy आता है, इतना ज़्यादा difficult नहीं है. But obviously practice से ही speed बनेगा. Eventually in these kind of aptitude based examination, speed is a very important component. तो वो practice से बनता है. Practice करते जाओगे तो speed बनता रहेगा. तो you can see an overview of the syllabus. और डरना नहीं है. इतना syllabus देकर डरना नहीं है. ठीक है? ईजी होता है. लॉजिकल रीजनिंग, और रीजनिंग इनहेरेंट होती है हर इंसान में. गॉड हैज़ गिफ्टेड दैट रीजनिंग एबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल. तो वो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. ठीक है? अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो CUT 2023 की बात करें, जनरल टेस्ट की, तो टोटल क्वेश्चंस अगर आप देखोगे रीजनिंग के क्लोज टू 8 into 20, 1/3. तब 60 क्वेश्चंस होते थे. ठीक है? इस बार 50 क्वेश्चंस हैं, तो क्लोज टू 1/3, इफ यू विल सी, द क्लोज टू 1/3 पार्ट वाज ऑफ रीजनिंग इन 2023. एंड इफ यू सी 2024, rather let's see what were the topics from which reasoning based questions were there in 2023. 18-20 questions were there. Number series based questions, arrangement based questions, visual reasoning, miscellaneous में blood relation questions, clocks calendar, syllogism, assertion reasoning based questions, conclusion based questions, direction based questions, ये सारे आए हुए हैं 2023 में. 2024 की बात करते हैं तो 60 क्वेश्चंस थे. तब रीजनिंग में 17, द मेजर कंपोनेंट वाज 25 to 26 क्वेश्चंस, क्लोज टू 40% कंपोनेंट वाज जीके एंड करंट अफेयर्स. लेकिन रीजनिंग की अगर बात करें तो 17 क्वेश्चंस वर देयर फॉर लास्ट ईयर 2024. और अगर हम डिटेल देखें 2024 में, आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस, लेटर नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस थे, राइट, अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस. इफ यू सी 4 + 1 is 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं, सरप्राइजिंगली अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं था. हाँ, लेटर नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विजुअल रीजनिंग, questions based on clocks, calendar, ranking, direction, a conclusion based question, circular arrangement based question. ठीक है? So 1 + 2 is 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 + 1 16 क्वेश्चंस थे. तो ये एक स्ट्रक्चर था 2024. ठीक हो गया? चलिए पढ़ते रहिए, घबराइए मत. एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.